We have to discuss the structures forming its boundaries, to discuss its content, and to correlate its clinicals. I think many of you know what is axilla. Axilla is other name given to armpit. Okay. And if you want to define it, it is a pyramidal shaped space situated between upper part of the arm and the chest wall. Okay. And it resembles like a four-sided pyramid. It has apex, a base, and four walls, which is anterior, posterior, medial, and lateral. Okay, so this is actually this green color is light green color is axilla. Okay, axilla armpit ka is another name for armpit, and it is a passage between the. यहाँ पे और this picture is more clear. This green color is actually axilla between this. You can say disconnect the arm with the chest wall. Okay, this passage is connecting the upper limb to the rest of the body. Okay, and this is a passage for vessels and the nerves and muscles to cross from upper arm or upper limb to the chest wall or from neck or chest to the upper limb. एक पैसेज है, गेटवे है. ठीक है, अगर और मजीद you want to define it, so it is an area lies below the glenohumeral joint at the junction of the upper limb and the thorax. What is the function? As I told you, that it is a passage by which neurovascular and muscular structure can enter and leave the upper limb, and it connects the arm or upper limb to the rest of the body. This is axilla. Okay. This armpit is again and again I'm saying this armpit is axilla. You know that medical has its own terminology, so we use this word axilla for armpit. Okay. Or when we are using this axilla word means it is a pyramidal shape. It has four walls. Okay. The four walls में हमारे पास there's a lateral wall which is formed by the intertubercular groove of the humerus. Really lateral मुझे समझ रहे हैं ना, lateral means the upper arm, okay, the arm, and the medial means the chest wall. Okay, the chest wall is consists of the serratus anterior and the thoracic wall. Thoracic wall means the ribs and the intercostal muscles. Then we have anterior wall. Okay, anterior wall is basically contains pectoralis major and the underlying pectoralis minor and the subclavius muscle. Posterior wall is formed by the subscapularis, teres major, and latissimus dorsi. I think these muscles have been discussed already. Anatomy में you have to learn and you have to memorize all these walls. आपको ये याद रखनी है कि how anterior wall is formed, how posterior wall is formed, how the medial wall is formed. So the question may be asked regarding these boundaries. This is a basic one. The lower posterior boundary, lowermost part is also known as posterior axillary fold, and this is a compound structure consists of latissimus dorsi and teres major. ठीक है, fold यानी जो muscles होते हैं they turn out and form a fold. आप अपने जब if you extend your arm, इसको extend करें, पूरा abduct करके रखें 90 degrees पर, you abduct your arm and over the 90 degrees, and then you can feel the axilla. Then you can feel the boundaries of the axilla, anterior, posterior, medial, lateral, and the folds also. Okay, and this posterior boundary can descend when there is weight loss. Like this, these color one is a pyramid shape. Okay, the superior one is the apex, and the inferiorly we have base. And there, these are the four walls. The blue color is the lateral wall. Okay, the purple one is the medial, and the green one is the posterior, and this orange is called as what base. ठीक है, and इस orange के साथ अगर थोड़ा सा जाएं तो फिर then we have anterior wall. बेस है ना, एक्चुअली बेस ही एंटीरियर वॉल होता है तकरीबन. ठीक है,
You have to memorize this picture carefully. अगर ऐसे गौर से देखें, you have to visualize this picture. This one is the apex. The upper part, green color is apex. Then we have this purple color. देखिए chest wall है, ठीक है, यहाँ chest wall से ही mesenteric anterior is getting origin. So you will find the mesenteric anterior muscle. The pectoralis major है, सही है. एंटीरियरली ये टर्न करके पेक्टोरस मेजर आ जाता है. This one is the base, the red line, okay, and ये जो red line है ना पूरी, this is showing actually the walls, the red line, the pyramid. The interboundary, the lower part of the interboundary is called as axillary fold. This rounded in shape and formed by the lower border of the pectoralis major. अब ये folds है ना, ये आप अगर हाथ लगा के देखेंगे, tighten, if you tighten your axilla, you can feel these folds. So anterior we have pectoralis major, posterior we have latissimus dorsi. Okay, some of the books also include the pectoralis minor in the anterior fold. And it can elongate after weight loss. वो descend हो रहा था, it can elongate. Again, this diagram is showing the pyramid shape axilla. Axilla is that much big. ठीक है, simply armpit को कहते हैं, but is formed like this. The pyramid shape space between the upper part है. This is actually apex, and this apex is moving towards or directed towards the cervical, जो हमारे पास canal है उसकी तरफ जाती है. न्यूरो and it carries neurovascular structures, ठीक है, which passes from either from the neck towards the upper limb or from upper limb towards the neck. Apex, what is apex? Apex is the axillary inlet. It is actually inlet. It is the other name is given to the apex is axillary inlet. It is upper end of the axilla and continuous to the root of the neck. Okay, root of the neck towards the posterior triangle of the neck. ठीक है, through cervicoaxillary canal. ये inside the body आपको feel होगा. अगर if you put your finger in the axilla, it will be directed posteriorly and it will be directed towards the apex. अगर आप if you put your hand into the axilla for examination, तो क्या होता है कि your fingers are directed posteriorly and this is actually going towards the apex of the axilla. Okay, medially this apex is bounded by the lateral border of the first rib, and behind there is a scapula. In front we have the posterior border of the clavicle, and it's a bony inlet. This one, okay, this is the lateral border of the first rib. This is scapula, and this is the posterior border of the clavicle, and this is apex. So apex is directed upward and backward. If you put your finger directed upward and backward, you will feel the apex of the axilla. Unfortunately, we don't have the physical classes. Otherwise, I can show you how you can palpate or how you can examine the axillary folds, axillary apex. Now this is another diagram. Structures. उसके बाद we'll go towards the apex. Apex is the upper part of the axilla. Base is the lower part of the axilla. ठीक है, upper part है and it is also known as the axillary inlet. It is space between the bones. कौन कौन सी है हमारे पास? Scapula, clavicle and the first rib. ठीक है, this is the apex. फिर हम आते हैं बेस पे. तो बेस इज एक्चुअली बेसिकली इट इज अ स्किन स्ट्रेचिंग बिटवीन बेस फोल्ड्स एंटीरियर पोस्टीरियर. अब आपको एंटीरियर फोल्ड का पता है, हाउ दिस फ्रॉम पोस्टीरियर किस तरह बनता है, तो आप बता दोगे कि हाउ दिस बेस इज फॉर्म्ड. ठीक है, मिडियली तो चेस्ट वॉल है, मिडियली कुछ और है ही नहीं.
शो कर रहा है कि मैं मीटिंग फिनिश हो जाएगी, तो मीटिंग फिनिश होती है तो मैं दोबारा लिंक भेजती हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द बेस। बेस में क्या है, दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द पेक्टोरस मेजर, ओके, एंड स्किन, ये जो पूरा एरिया है ना, दिस एरिया इज कवर्ड बाय द स्किन। ठीक है, again this diagram is showing the anterior wall, this one is the pectoralis minor। ऊपर हमारे पास सब क्लेविस मसल है beneath the clavicle, okay, this is the pectoralis minor, then there are some nerves which are passing through this axilla, this is the posterior wall। अच्छा, पोस्टर वॉल में ना क्या होता है कि these muscles are arranged in a way that they are forming some spaces, triangular space है, quadrangular space है, ठीक है। These spaces are actually formed because of the arrangement of the muscles, and these spaces give passage to the neurovascular bundles, move from back to anterior side, ठीक है। The spaces बन रहे हैं ना in between, we are not going to discuss these spaces right now। मीडियल पार्ट में हमारे पास है बाय द अपर 4 और 5 ribs and the intercostal spaces covered by the serratus anterior muscle। These are the ribs, okay, this is the humerus in and this is the medial wall। upper 4 5 जो है हमारे पास ribs हैं, they are actually forming the medial wall of the axilla। Again, these are the showing this spaces, the quadrangular space, the triangular space, ठीक है। These spaces actually give passage, the vessels move from one compartment to another compartment। These spaces are formed by the arrangement of the muscles, ठीक है। इस spaces का क्या फायदा है, axilla again is a passage, again is a space which is connecting upper limb to the chest wall। So these quadrangular and triangular spaces are what they are giving passage to the structure passing from back towards the anterior surface, ठीक है। रेडियल नर्व को लेके आ रहा है, एक्सिलरी नर्व को लेकर, क्वाड्रेंगुलर का मेन जो है वो है हमारे पास रेडियल नर्व, ट्रायंगुलर स्पेस के मेन है हमारे पास, सॉरी, क्वाड्रेंगुलर का एक्सिलरी नर्व है, और ट्रायंगल का हमारे पास है रेडियल नर्व along with the one vessel। So this actually this जो है हमारे पास diagram is enough for triangular and quadrangular spaces। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Now the content of the axilla, axilla के content में हमारे पास axillary artery है, we have axillary artery, axillary vein, brachial plexus, axillary lymph nodes। axillary lymph nodes का group है पूरा, and some muscles, ठीक है। अच्छा, axillary artery जो है, again you have to study the whole of the axillary artery। axillary artery, अच्छा, when you are going to study axillary arteries, you should know from which part it is starting and where it is end, ठीक, ending, how many parts are there, what are their relation and what are their branches। if you are studying artery, if you are studying vein, you should know how it is formed। usually arteries are मतलब is coming towards the limb, and this veins are coming out of the limb। arteries are coming from the neck towards the limb, and these veins are forming below in the upper limb, and then they will enter into the neck। so how these veins are formed, by the union of which veins, and what are the tributaries। vein has tributaries, always you can say tributaries, not branches। arteries has branches। so when we are going to study artery, the general formula from which part it is beginning, okay, and where it ends। so our axillary artery begins at the lateral border of the first rib as a continuation of subclavian artery, ठीक है। it is a subclavian artery, but when it crosses the lateral border of the first rib, its name is changing from subclavian to axillary artery। this artery is actually ending at the lower border of the teres major, where it continue as a brachial artery। अब ये एक ही आर्टरी है, ठीक है। इट स्टार्ट, यानी कि एक आर्टरी कौन सी थी, सबक्लेवियन आर्टरी, मेजरली जो है हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी, व्हिच इज अराइजिंग इन द नेक, and then when it crosses the first rib, these are landmarks actually।
we give the name to this artery as axillary artery. ठीक है, when this subclavian artery is crossing the first rib, it changes its name from subclavian to axillary artery. When it crosses the teres major, then it changes from axillary to brachial. ठीक है, यानी एक ही आर्टरी थी subclavian, it was changing into axillary then to brachial. तो अपर लिम्ब को एक आर्टरी सप्लाई कर रही है मेजर which is axillary artery. ठीक है, the artery is closely related to the cords of the brachial plexus and their branches and is enclosed with them in a connective tissue sheath called the axillary sheath. In this sheath, और जो sheath है ना, is traced upward into the root of the neck. It is seen to be continuous with the prevertebral fascia. अच्छा, वेसल्स और नर्व जो होते हैं यूजुअली दे आर इनक्लोज इन द शीथ. तो ये जो है इन एक्सिलरी शीथ दे आर इनक्लोज्ड. उसका रिलेशन क्या है ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ? जो कॉर्ड्स है ना, एक्चुअली एंटीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड, दे दीस नेम आर गिवन to these cords according to this relation with this artery. आर्टरी के साथ क्या रिलेशन है उस कॉर्ड का, वो उसको नाम दिया गया है ब्रेकियल प्लेक्सस को. ठीक है, द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी कितने पार्ट्स है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. किस तरह से? द पार्ट बिफोर द teres minor जो है ना एक्चुअली क्रॉसिंग दिस आर्टरी. तो जो पार्ट है बिफोर दिस teres minor is first part, the part which is behind this pectoralis minor is second part, the part after this pectoralis minor is called as third part. ठीक है, the first part extends from the lateral border of the first rib to the upper border of the pectoralis minor. उसके रिलेशन में क्या क्या आता है? रिलेशंस में है एंटीरियरली वी हैव पेक्टोरस मेजर एंड द स्किन, पोस्टीरियरली वी हैव द लॉन्ग thoracic nerve, या nerve to serratus. This other name for long thoracic nerve is a nerve to serratus anterior. Laterally we have 3 cords of the brachial plexus and medially there is a axillary vein. Then the second part is the bush part which is covered by the pectoralis minor. So lies behind the pectoralis minor. Relation में हमारे पास anterior pectoralis minor आ गया, pectoralis major and the skin. Posteriorly we have the cords of the brachial plexus. वही जो हमने बात की थी ना cords की, the subscapularis muscle and the shoulder joint. Laterally we have lateral cord of the brachial plexus. Medially we have the medial cord of the brachial plexus. These cords are actually these name are given according to the relation of these cords with the एक्सिलरी आर्टरी. जिस तरह से ये एक्सिलरी आर्टरी के साथ रिलेटेड है, यानी अगर एंटीरियर अगर लेटरल है कॉर्ड तो हम कहते हैं द ब्रेकियल पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस व्हिच इज लाइंग लेटरल, हम कहते हैं ये लेटरल कॉर्ड है. द पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज लाइंग मीडियल तो हम कहते हैं मीडियल कॉर्ड. जो उसके पोस्टीरियर हम उसे कहते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड. ठीक है, तो ये जो कॉर्ड्स के जो रिलेशंस हैं ये है अकॉर्डिंग टू एक्सिलरी आर्टरी. Third part of the axillary artery is extending from the lower part of the pectoralis minor to the lower border of the teres major. Okay, anteriorly is relation anterior we have pectoralis major. For a short distance lower down, the artery is crossed by the medial root of the median nerve. Posteriorly, the subscapularis muscle है, the latissimus dorsi है, and the teres major. The axillary and the radial nerve also lie behind the axillary, this artery. ठीक है, coracobrachialis and the biceps muscle and the humerus. The lateral cord of the median nerve. अब देखो laterally हमारे पास क्या है? The median nerve have 2 cords, lateral and median. Median nerve is formed by 2 cords. One is from lateral part, जो lateral cord के part से, one is the median. तो दोनों जो relations हैं, तो anteriorly हमारे पास इसका है medial root of the median cord और लेटरली हमारे पास है लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व. ठीक है, मेरे ख्याल से ब्रेकियल प्लेक्सस पे आपकी क्लास हो चुकी है. तो मीडियन नर्व इज फाउंड बाय 2 रूट्स, लेटरल रूट एंड मीडियल रूट. तो मीडियल रूट इज रिलेटेड टू द एक्सिलरी आर्टरी एंटीरियरली. ठीक है, एंड द लेटरल रूट इज रिलेटेड टू एक्सिलरी आर्टरी लेटरली. मीडियली वी हैव द अल्ना नर्व एंड द एक्सिलरी वेन. एक्सिलरी वेन जो है थ्रू आउट लाइफ इसके मीडियल रिलेशन में हमारे पास एक्सिलरी वेन तो पक्की पक्की है. ब्रांचेस कैसे हैं एक्सिलरी आर्टरी की? फर्स्ट पार्ट गिव्स द 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट गिव्स 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट गिव्स 3 ब्रांचेस. ठीक है, पहले पार्ट से कितनी है? फर्स्ट पार्ट की 1 है, सेकंड पार्ट के 2 हैं, थर्ड पार्ट के 3 हैं. एंड देयर इज अ वेरी ग्रेट एनास्टोमोसिस बिटवीन द थर्ड पार्ट ऑफ द axillary artery and this first part of subclavian artery.
ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बीच उससे लेके फिर थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में एक एनास्टोमोसिस बनता है, जो एक्चुअली एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला है, जो आपने शायद मेरे ख्याल से ये क्लास में हो चुकी है आपकी। तो इस एनास्टोमोसिस से क्या होता है कि दिस इज द कोलैटरल सर्कुलेशन फॉर द अपर लिम्ब। अगर इफ दिस एनास्टोमोसिस इज नॉट देयर, so if any damage, any problem with the axillary artery can causes necrosis of the upper limb. But we fortunately we have anastomosis between first part of the subclavian and third part of the axillary artery. If there is blockage from second part of the subclavian, third part of the subclavian, first part of the axillary and second part of the axillary artery, इनके दरमियान अगर कोई ब्लॉकेज है, if there is ligation, blockage or any problem from second part of the subclavian to the second part of the axillary artery, we have the collateral circulation. लेकिन if there is a blockage before the first part of the subclavian, then there is no other anastomosis or no collateral circulation. उसके बाद हमारे पास कोई circulation collateral बचती नहीं है, फिर obviously upper limb जाएगा या फिर blow है हमारे पास, ठीक है। आफ्टर दिस एनास्टोमोसिस है तो अगेन जो है ना अपर लिम्ब की नेक्रोसिस होगी। So first part has one branch which is the superior or highest thoracic artery, is a small and runs along the upper border of the pectoralis minor. Second part के दो branches हैं, thoracoacromial and the lateral thoracic, ठीक है। Thoracoacromial immediately divides into terminal branches and lateral thoracic artery runs along the lower border of the pectoralis minor. Then we have 3 branches from third part. Number 1 is the subscapular artery. Number 2, anterior circumflex and the posterior circumflex humeral artery. These are actually major arteries and they binds around the humeral artery. Circumflex humeral means they binds around the humerus. That's why the name is given to them. The subscapular artery is actually the artery which is participating in the scapular anastomosis. This is the major artery which is forming this anastomose between the first part of the subclavian and the third part of the एक्सिलरी आर्टरी। तो सबस्केपुलर आर्टरी जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट से जो अराइज हो रही है, एक्चुअली दिस इज फॉर्मिंग द एनास्टोमोस विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम शोइंग द 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज दिस इज अ सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ पे रिब है, रिब के बाद इट चेंजेस इट्स नेम एंड कन्वर्टेड टू एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट टाइप की डायग्राम है which is showing the how axillary artery is formed and ends, what are its branches. So subclavian artery, third part of the subclavian artery converted into the axillary artery at the lateral border of the, this is the lateral border of the first rib, and from first part of the axillary artery we have one branch, ये रही superior thoracic artery. फिर इस then this axillary artery is crossed by the teres pectoralis minor. ये याद रखना है बेटा कि which how this artery is divided into 3 parts. So this artery is divided into 3 parts by the pectoralis minor. So this muscle is crossing this and dividing into 3 parts. The part before this, between the rib and the pectoralis minor, this part, and this is giving actually one branch. Then part behind this muscle giving 2 branches is second part, the part from this part and from this lateral border of the pectoralis minor towards the जो हमारे पास ये था teres major के border तक, it's called as third part, and this is giving 3 branches, ठीक है। कौन कौन सी हैं हमारे पास 3 branches? Subscapular थी, lateral and medial circumflex humeral arteries. If you are visualizing this diagram and if you are able to understand this diagram, it will be easy for you to understand how this artery is divided into 3 parts and what are the branches of all these 3 parts. Again, is a diagrammatic presentation of the axillary artery and its parts. Okay, how it is entering into the axillary inlet or apex. स्किन है, ये फ्लोर ऑफ एक्सिला है, ठीक है। इसके रिलेशंस हैं एक्चुअली एक्सिलरी आर्टरी के। Now the axillary vein is actually the major vein which is draining the upper limb and it is formed by the union of the
basilic and cephalic veins. ठीक है. The axillary vein is formed at the lower border of the teres major muscle where this artery is terminating. The axillary vein will start by the union of the vena committant of the brachial artery and the basilic vein. What do you mean by vena committant? Means there is more than one vein. Okay. Artery is usually one and it is accompanied by the more than one vein. We call it vena committant. ठीक है. Vena committant का मतलब है कि there are more than one vein. तो बेसिलिक एंड जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल वेन्स हैं, इनकी जो है वेना कमिटेंट यूनाइट टू फॉर्म दिस एक्सिलरी वेन. It runs upward on the medial side of the axillary artery and ends at the lateral border of the first rib by becoming the subclavian vein. वही कोर्स है बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. आर्टरी सबक्लेवियन से आ रही थी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगी. ठीक है. The vein receives tributaries which correspond to the branches of the axillary artery and the cephalic vein. तो brachiocephalic trunk जो है is dividing into common carotid and the subclavian artery. ठीक है. तो brachiocephalic से subclavian and common carotid arise होती हैं. देन सबक्लेव जो हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं वेन जो है वो कैसे क्या करती है, ये वेन एक्सिलरी जो वेन है फिर सबक्लेवियन में कन्वर्ट हुई, सबक्लेवियन के साथ इंफ्राजुगुलर मिलके ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक वेन बनाएगी. ठीक है. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आर्टरीज का है और ब्रेकियोसेफेलिक वेन है हमारे पास दो. ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड में डिवाइड होके आ रहा है. ठीक है. और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक इज डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा. ये पूरा कोर्स आपको आना चाहिए कि आर्टरी कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है. दिस इज द वेन ब्रेकियोसेफेलिक एक्सिलरी वेन यहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है. ये गई बन गई और ये देन इट इज यूनाइटेड बाय द इंफ्राजुगुलर वेन एंड फॉर्म्स द ब्रेकियोसेफेलिक वेन. And two brachiocephalic actually joins to form a superior vena cava. Then we have infraclavicular part of the brachial plexus and branches. जो है brachial plexus की branches especially जो है हमारे पास they are in the axilla, a collection of the spinal nerve that forms the peripheral nerves of the upper limb. इसमें हमारे पास long thoracic and intercostobrachial nerves भी हैं. अच्छा, axillary lymph nodes are very important. There is a group of the axillary lymph nodes. They filter lymphatic fluid that has drained from the upper limb. Thoracolumbar region above the umbilicus is also drained into the axilla. ठीक है. Lateral part of the breast. और अगर if the axillary lymph nodes are enlarged, so they are non-specific indicator of the breast cancer. Means हम जब whenever we are considering breast cancer, we also palpate the axillary lymph node. Sometimes the patient may came only with the enlarged lymph nodes, axillary lymph nodes, and they have breast cancer. अब axillary lymph nodes में हमारे पास there is a group of this is actually formed by the group of 5 जो है 5 groups हैं, union of the 5 groups. One is the anterior, posterior, lateral, central, apical and infraclavicular. Infraclavicular में ये drain करते हैं actually. 5 groups में कौन कौन से? anterior, posterior, lateral, central and apical. Anterior जो है along with the medial wall of the lateral thoracic vein. Posterior जो है lie along the medial wall of the subscapular vein. Lateral along the medial side of the axillary vein. Central in the center of the axilla. ठीक है. ये क्या करेंगे? ये दो anterior, posterior, lateral, they all will drain into the central and then the central will drain into the apical. Apical will drain into the infraclavicular. ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास पहले तो axillary lymph nodes हैं which is divided into 5 groups: anterior, posterior, lateral, central and apical. ठीक है. Anterior, posterior and lateral, they collectively drain and then they will drain into the central. Central will drain into the apical, फिर apical फिर infraclavicular में चला जाएगा. लिम्फेटिक्स थोड़ी मुश्किल होती है कि प्राइमरी लिम्फ नोड्स कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फ नोड्स कौन से हैं, टर्शियरी लिम्फ नोड्स कौन से हैं. कि प्राइमरी का मतलब है कि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लिम्फेटिक्स, वो प्राइमरी हैं वो लिम्फ नोड्स. ठीक है. डायरेक्टली लिम्फेटिक्स उनमें आ रही है. Then these lymph nodes are draining into another lymph node, तो फिर कहलाते हैं वो सेकेंडरी.
फिर जब दो ग्रुप ऑफ द lymph nodes are crossed by one lymphatics and then drained into third lymph node, तो हम उसे कहते हैं tertiary. तो anterior, posterior, lateral are the primary lymph nodes. Then they drain into central. Central को हम secondary कह सकते हैं. Then they will drain into the apical. तो फिर वो कहलाते हैं tertiary. Okay, these are the groups which are located into the axilla. देखो ये सेंटर में है, they are central. पोस्टीरियर जो है सब स्केपुलर वेन के साथ रिलेटेड है. लेटरल जो है किसके साथ, ये जो एक्सिलरी वेन के साथ रिलेटेड है, ये सेंट्रल पड़े हुए हैं सेंटर में. एंटीरियर किसके साथ है, पेक्टोरस मेजर के साथ रिलेटेड है. ठीक है. अपाइकल लिम्फ नोड एपेक्स में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अपाइकल. ये लेटरली मतलब जो ह्यूमरस की तरफ है वो लेटरल कहलाएंगे. देन वी हैव पोस्टीरियर, सेंट्रल, अपाइकल. ठीक है. एंटीरियर. Muscles which are crossing this axilla or passing through the axilla are biceps brachii, shorted of the biceps brachii and the coracobrachialis. Okay, they passes through the axilla. This is the axillary artery. This is the axillary vein. These are the sheath. The axillary sheath with green color की जो sheath है, ये actually these are the branches of the brachial plexus. They all are enclosed in the axillary sheath, and these are the tendons of the muscles which are crossing the axilla. अच्छा, ये कुछ सिनेरियोज हैं. We have already put some of them into the your booklet में प्रेजेंट है ये. ठीक है. बिल्कुल एज इट इज प्रेजेंट नहीं है, चेंज किए हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल इन पे अगर बीसीक्यू बनता है तो वो किस तरह बनेगा. ठीक है. अब एक बीसीक्यू है, 30-year-old woman visited the consultant with the complaint of the mass in the upper outer quadrant of the right breast and her axillary lymph nodes were also palpable and skin overlying the breast appeared dimpling. Breast lymphatic is draining in which group of the axillary lymph node. अब देखो ऊपर तो क्लिनिकल दिया हुआ है ना, but we are not asking about the tumor, we are not asking about the treatment of the tumor, diagnosis नहीं पूछ रहे हैं. but हम पूछ रहे हैं कि जो ब्रेस्ट के लिम्फेटिक से कौन से लिम्फ नोड के पार्ट में या कौन से ग्रुप में ड्रेन होती है. ठीक है. ऑप्शंस दिए हुए हैं. एक्सिलरी में है, एंटीरियर में एक्सिलरी ग्रुप में है, पोस्टीरियर में है, लेटरल में है, अपाइकल में, सेंट्रल में. यू शुड नो दिस आंसर. आता है बेटा किसी को जवाब? क्वेश्चन पढ़े, इसको देखें और मुझे जवाब बताएं. यस अजमल. आर्टेरियल ग्रुप. ठीक है.